Yeah, I understand. Sometimes wireless things don't work well, but we have to switch to the age-old wired methods of communication and all. That's the reason why. Yeah, thank you so much for joining on a Saturday morning. And today we're going to start with our financial statements, especially the study unit number 1 for CPA FAR syllabus or FAR section. And all of you, it's really nice to see a very good audience in the morning, and it makes me feel so happy to train all of you guys. So शुरू करते हैं हम. Just give me a moment. Let me switch on the screen sharing option, and um, just hang in there for a while, okay? And I'll also share you my iPad screen. In this way, you guys can also see what I'm trying to write, and you will get a real-time understanding at the same time as well. Any questions and anything you have, you can just feel free to ask me at that moment itself, or else if you want to wait, then you can also ask me later, right? So that's absolutely fine. Just give me a moment. Let me do the screen sharing. All right. I hope you guys can see the screen right now, and we'll just start. Just give me a moment. All right. So if you can't see the screen, or if there is any issue, just get back to me, and I'll help you out at the right time itself, right? So thank you so much. And today we are going to start with balance sheet. Okay, we are going to start with section 1.1, which is balance sheet, statement of financial position, and how our session is going to go through all the way is what I'm going to show you. Okay, so सबसे पहले हम बैलेंस शीट से शुरू करेंगे, and then we would be getting all the way to basic accounting equation, and we'll be solving. I would be just giving you a demonstration. ठीक है ना? So I'm just going to show you how exactly these things going to be, and comparative statement of financial position क्या होता है, and all these things. More importantly, then again, we'll be looking into the current assets. What do you mean by current assets and non-current assets? What is again the difference between these two? We'll be also getting into the different kinds of other kinds of assets as well, intangible asset, other non-current assets as well, current liabilities, and again, non-current liabilities. We'll be talking about that as well, equity. So with this, we are going to finish 1.1, and then we'll be getting into 1.2, statement of income. Now, before we get in there, right? So सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट क्यों करते हैं, और सबसे उससे भी पहले, ठीक है ना, हम स्टडी यूनिट 1 में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? सो स्टडी यूनिट 1 में वी आर गोइंग टू लर्न बैलेंस शीट, एज यू गाइस कैन सी ओवर हियर, राइट? बैलेंस शीट के बाद हम जो करने वाले हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इनकम, comprehensive income, statement of changes in equity, and special purpose frameworks. So what you would be learning over here is, I'm going to show you in a moment the interface, right? So what you would be seeing, or what you would be learning from over here from client. So we would be dividing our entire syllabus into different study units. And what are the study units, or kitne study units hai sir in total, or hame kitne study units padna padega, and all these things, right? So we would be covering our entire FAR program or FAR syllabus in 60 hours, and
the entire 60 hours would be comprising of all the 15 study units. और हर study unit के अंदर छोटा छोटा टॉपिक्स होगा. जैसे आज आप देख रहे हो 5 टॉपिक्स है या 5 चैप्टर्स है पहले स्टडी यूनिट 1 के अंडर. ठीक है. So then immediately I would be taking you back into my iPad screen so you guys will be able to understand like where exactly our study process is going to go. Now this is exactly what you guys can see, right? So 5 सब टॉपिक्स या 5 चैप्टर्स जो है ये है. शुरू करेंगे हम बैलेंस शीट से, फिर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, changes in equity and special purpose framework. All right, this is exactly how our progress is going to go. Now sharing you my iPad screen once again so you guys can see exactly what I'm writing, what I'm trying to annotate and all these things. And again, don't you worry क्योंकि ये reason ये बहुत ही simple सा question and most of the students would definitely will be asking me that are you going to share me these documents later? Yes, of course. These documents are in PDF format, so you'll be definitely getting a copy of all these things later. But you have to wait क्योंकि इसको मैं तोड़ नहीं सकता बीच में. यहाँ पे अगर आप 18 pages देख सकते हो, you have to wait till all the 5 chapters are over. Once all the 5 chapters are over, ये जो भी extra scribbles जो भी मैंने किया हुआ है यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा. If you also want just the normal unscribbled or unannotated document also, you can get it at the same time. You don't have to worry about that. So we are going to start off with balance sheet. सबसे पहला जो चीज आज का टॉपिक जो है वो है बैलेंस शीट. आप बैलेंस शीट क्या है और बैलेंस शीट क्यों आप करते हो, बैलेंस शीट का मेन पर्पस क्या है, व्हाट्स द मेन रीजन व्हाई वी ऑलवेज नीड अ बैलेंस शीट एंड व्हाई वी ऑलवेज have our eyes on the balance sheet, especially whenever we are trying to understand the financial position of any company. Because balance sheet refers to balancing, right? So balance sheet क्या है, इस नाम से पता चलता है कि it's an Excel sheet. Excel sheet, yeah, it's a spreadsheet. It's a sheet where the money is balanced. So what do you mean by balancing the money over here? I have annotated few things before, but I would be annotating few things, a few more things as well. So this is exactly the traditional form of balance sheet where there are assets and there are liabilities. Right, so either way, some places they write assets on the left-hand side, some places they write liabilities on the left-hand side. That's absolutely fine. But assets refers to what business owns, right? So what business owns? What I own is exactly what I owe, right? So what business owns is exactly what's equal to what business owes. ठीक है. अगर किसी के पास बेसिक्स नहीं है अकाउंटिंग का, so you don't have to still worry because we'll be definitely helping you out with understanding or learning few basics as well. But you don't even need, because CPA program, the way CPA program has been designed कि किसी का बेसिक्स भी नहीं है, जैसे कोई BSc बैकग्राउंड से भी आता है तभी भी वो इतने बेसिक्स पे CPA प्रोग्राम आपको ले जाता है कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप वैसे भी आप कर सकते हो. So this is exactly why we are diving down into the basics. Like we just understand that yes, these are the assets, these are the liabilities. What the business is owning is exactly what the business owes. That means what you offer. As in terms of what you offer the money, you don't offer, but what you owe the money to the as a liability to the creditors and all those people, especially the banks and financial institutions and the creditors and all. And that should be equal in terms of dollar units. It should be equal to what you own. कि आप जितना कमाते हो आप जितना own करते हो, ठीक है ना, that should be equal to what you owe, right? That's where your liability should be equal to your assets. And when you balance it together with the same dollar figure, you know, it should be the same figure, right? So you can't say that what in case my assets are more than my liabilities and equity, then would I say that my balance sheet is balanced? It's an unbalanced balance sheet, right? So we'll be looking into all these things, but first of all, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, that is the general purpose financial reporting includes the full set of financial statements. So full set of financial statements है क्या, ये बाद में आएंगे कि एक सेट के अंदर क्या क्या रहता है, जो यहाँ पे नीचे आपको मेंशन किया गया है कि फुल सेट को हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना. तो फुल सेट को अगर डिफाइन करेंगे, सो इट्स बेसिकली द फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच इंक्लूड्स व्हाट, दैट्स एक्जेक्टली द बैलेंस शीट, राइट, व्हिच इज द बैलेंस शीट which includes your assets, your liabilities, your equity. Then you have your comprehensive income as well. Comprehensive income is comprising of what? It includes your income statements and your other comprehensive income, ठीक है ना. So income statement भी है, other comprehensive income भी है. और income statement में क्या usually आता है, you have your revenue, you have your expenses, gains and losses.
for the period. So it could be for one particular period. We will be talking about that in a moment. That balance sheet is basically referring to a statement of financial position on one date. On one date. Case the 31st December, whatsoever may be the year, we don't care. But right now, yes, December 31st को आपका financial position क्या है? मगर comprehensive income सब वैसा नहीं है. Comprehensive income ऐसा है जहाँ पे आप एक certain period का एक टोटल पीरियड का आप इनकम्स, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस ये सब मिला के आप देखते हो. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट बाय एंड डिस्ट्रीब्यूशंस. इन्वेस्टमेंट बाय, नाउ दिस वन रेफर्स टू a kind of a capital contribution कि आपने कहीं बिजनेस में पैसा डाला हुआ है, एफपीओ आईपीओ आपने किया हुआ है. ये भी मैं लिख लेना चाहता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है. IPO and FPO, right? So IPO and FPO refers to initial public offering, further public offering, or it could be distributions. So distributions to owners basically क्या होता है? These are exactly in the form of repayment, right? We can say repayment. There could be any kind of repayments or dividend distribution. सबसे famous जो चीज है यहाँ पे, famous form of distribution to the owners. Who could be the owners? Owners would be your equity shareholders, your preference shareholders, so on and so forth, blah, blah, blah. Right. And then again, you have your cash flows during the period or during 1 year's time. एक साल में से आपके कितने कैश इनफ्लोज हुए हैं, कैश आउटफ्लोज. कैश फ्लोज मतलब ओनली इट कंप्राइजेस ऑफ द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. तो कितना कैश आया है तो कितना कैश गया है, बस इतना सारा चीजें हैं. ठीक है. एंड देन अगेन वी आर गेटिंग इनटू नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? सो सप्लीमेंट और फर्दर एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लाइक we can say that, right? So we can say that not everything can be converted into figures. कुछ ऐसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा जहां पे आप you can't really rely on the on dollar figures, right? But you have to put it in words. तो सर बैलेंस शीट जो है उसमें सिर्फ आइटम्स रहता है और डॉलर फिगर्स रहता है. तो उसमें हम वर्ड्स में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हम we want to let people or let the users know, how exactly can we do it, right? We have to have a space for adding some extra few notes, right? So we are adding few notes or extra notes which is going to help the users of financial statements understand that what exactly happened, what's going to happen, or what's the reason for such kind of a change, and all these things, right? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स है, कोई डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि हाँ सर हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, कुछ डिस्क्लोजर्स हमें अच्छी तरीके से देनी पड़ेगी. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें. सो notes may not be used to correct an improper presentation or as a substitute for recognition. So yeah, that's again, it's just a supplementary item. That's why you call it as a there is required supplementary information. यहाँ पे होगा, मैंने RSA लिखा हुआ है यहाँ पे. RSA का मतलब है कि supplemental information. You just supplement, you're just adding few more extra information which may not be useful to everyone, but in some way or the other that people still use it, right? So the note should contain what, let's say, information about the financial statement, line items. We'll be talking about the line items in a moment. जब हम नीचे एक description सीखेंगे इसका, या कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एक फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट को हम स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं लाइंस टू लाइन आइटम्स, राइट? हर लाइन पे एक एक आइटम्स होता है. That the reporting entity unrecognized past events and current circumstances that can affect the cash flows. Very straightforward, easy to understand. Okay. If you have any questions, just open up your mic and you can just pick up, because at the moment I can't see any chat screen over here. I can see if you're putting any comment, then I have to exit this one, and then only I can see if there are any comments from your side. But it seems to be there are no comments in the chat box. अगर किसी को कुछ भी questions है, पूछना है and all, you can just unmute yourself and you can get in here. Okay, you can get in touch with me, and then I'll try to help you out with whatsoever the questions you may be having. Now we are getting into the basic accounting equation. बहुत simple basic accounting equation ये है कि what business owes is exactly what business owns. So you own the assets, right? So you own the assets that is basically equal to your liabilities plus equity.
Right. So that again, the balance sheet reports the assets and liabilities, equity, and the relationships at a moment in one time. Right. So this is exactly what I was trying to mention. यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि sir, at one moment in time, that's where we are saying that balance sheet is referring to the statement of financial position of on one particular date, right? So one particular date over here refers to one day on which you are trying to evaluate, you're trying to put the valuation, you're trying to do the valuation of all the, the assets and liabilities and equity and the relationship with each other. Talking about the relationship over here, we're just talking about the fact that assets are equal to your liabilities plus equity. Liabilities plus equity over here. Now, liabilities plus equity over here, why do we put this thing together? Because this is exactly what the business has to pay back to you. आपने पैसा लगाया, वो बन गया equity. बिजनेस में लोगों ने बाहर से पैसे लगाए, क्रेडिटर्स ने पैसे लगाया, बैंक ने आपको पैसे लेंड किया है, सो ये सारे को हम लाइबिलिटीज बोलेंगे। तो ये सब जन ने, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब जन ने पैसे लगाए हैं और यहाँ पे आपने पैसों से चीजें खरीदा हुआ है, right? So that's exactly what you call it as an asset. Simple equation है ये, ठीक है? So assets are generally reported in the order of liquidity. Okay. सबसे important चीज जो है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, that just keep this thing in your mind that assets are always reported in the order of their liquidity. Now, what do you mean by liquidity over here? Just again, off track जा रहा हूं मैं थोड़ा. Of course, we would be talking about all these things later, but then liquidity over here refers to, you can say quickness in cash conversion. So how fast or how quickly your assets can be converted into cash. Right, how quick you are in cash conversion. So over here you can see that current assets is much more easier for you to convert into cash, right? Non-current assets is not that easy. जैसे कि अगर आप cash and cash equivalents, जैसे कि मान लेते हैं cash and cash equivalents, वो तो ऑलरेडी कैश में है, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल, डेट सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन सबको कैश कन्वर्जन होने में एट मैक्स 1 साल लगेगा। मगर सोचो कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेचना इतना आसान नहीं है, खास करके प्रॉपर्टी अगर मान के चलते हैं, जैसे you have a warehouse, you have a land, on the land you have a warehouse being constructed. Do you think that it's that easy for you to dispose the land, like demolish the warehouse and sell all the scrap in just a jiffy, or let's say in just like 1 or 2 months time or 6 to 8 months time? It's not that easy, right? So you have to find a broker, or you have to have a good deal, and so on and so forth, right? So इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हम कैश को, एसेट्स को हम अरेंज करके रखते हैं, लाइबिलिटीज को हम अरेंज करके रखते हैं। और जब हम एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स वेरी ऑब्वियस दैट वी आर लुकिंग एट कैश एंड दीज आर द लाइन आइटम्स। अगर मैं आपको बताऊं कि लाइन आइटम्स क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स, सो दीज आर द लाइन आइटम्स ओवर हियर, that is current assets, non-current assets, ठीक है ना? So current assets में you have notes receivable, accounts receivable. All right, so accounts receivable basically क्या है? So accounts receivable refer to, it's basically nothing but your debtors. तो सर कितने डेटर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कितने डेटर्स हैं? और नोट्स रिसीवेबल जो है, these are like bills receivable, right? These are general receivables. Inventories जो है आपका, inventories में आ गया आपका, ये सब हम current assets पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि work in progress और let's say raw materials, ठीक है, raw materials हो गया, या finished goods हो गया, या finished products हो गया, ये सब आपके inventories में आ गए, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस आपने पहले से पे किया हुआ है, ये सारे आइटम्स, if it sounds new to you, then you don't have to worry about it, but if it sounds familiar to you, then of course you would be knowing what I'm trying to say. Like these are different kinds of current assets, right? So current assets over here, these are the ones. Now non-current assets, of course, your equity method investments. These are your general investments. So I would rather say these are your long-term investments. These are your long-term investments. And then you have your property, plant and equipment minus accumulated depreciation, goodwill, and all these things, right? So just on the same, on the similar lines over here, if you also want to see, then you will understand that current liabilities are the ones in which the money has to be paid within 1 year's time.
राइट, नॉट मोर देन दैट, राइट। सो ये करंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट नोट्स हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। Now, what about the non-current liabilities over here? Non-current liabilities refer to your non-current liabilities refer to those liabilities which you don't have to pay in 1 year's time. जैसे कि आपको एक बैंक लोन हो गया, कौन कौन है वो बैंक जो आपको बोलेगा सर आज आप लोन ले लो लॉन्ग टर्म के लिए और आप 6 महीने के अंदर ही पे कर लो? कोई भी नहीं बोलेगा। ऐसे अगर कोई बोलेगा तो कोई कस्टमर बैंक के पास क्यों ही जाएगा, राइट। सो जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, नोट्स और बॉन्ड्स, these are basically called fixed income securities. I don't have much space over here, but I just write down fixed income securities. These are the fixed income securities, right? Long-term notes payable, these are the bank loans or employee-related obligations, deferred income taxes के बारे में हम थोड़ा दूर ही रहें अभी, सही होगा, क्योंकि deferred income taxes को लेके बहुत जन का confusion रहता है, and I really don't want to scare you, but then it's a fact, but it's the most easiest part of your FAR syllabus, one of the most easiest part or easiest sections for you to cover, or easiest topics for you to cover. So deferred income tax is absolutely fine. It's very easy. So total non-current liabilities are here, and then you have total liabilities. So total liabilities refer to the summation of A and B over here, which is current and non-current. And then you have your equity. So what do you have equity over here? You have common stock, which is always going to be calculated the par value, additional paid in capital. एक stock अगर $1 का stock अगर आप $4 पे बेचते हो, तो क्या होता है कि $1 का स्टॉक अगर आप $4 पे बेचते हो तो $1 जाता है आपका पार वैल्यू पे, और $3 जो एक्स्ट्रा जो होता है वो आपका बनता है क्या, प्रीमियम। ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, this premium goes to a separate account which is known as additional paid in capital account, which is again shown separately under US GAAP. Accumulated OCI, OCI refers to other comprehensive income, इसके बारे में आपको जानकारी बाद में मिलेगा. And then comes your retained earnings. So what do you mean by retained earnings over here? It refers to how much have you not paid out. जैसे कि अगर एक मान के चलो कि अर्निंग्स पर शेयर अगर आपका $10 है, उस $10 में से आप दे रहे हो डिविडेंड, हर शेयर के पीछे आप $2 का डिविडेंड दे रहे हो, तो आपने कितना रिटेन किया सर? तो मैंने रिटेन किया $8, तो वो $8 बेसिकली आपका रिटेन अर्निंग्स है जो आपको यहाँ पे दिखता है. So it's a very simple concept over here, but again, I don't want to add too much of data over here, so I'm just removing this one, right? So I hope you guys understand over here, and then we're just trying to get into more in details, right? Understanding what are current assets, even though मैंने थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया हुआ है, but again, फिर से we're just trying to understand a little bit more on current assets. So current assets refer to instant, something which is leading to instant conversion into cash, right? So मैंने बोला आपको how quick or what's the readiness of an asset being converted into cash. So वो कैसा एक चीज है जो कि asset नहीं है, मतलब asset है मगर cash नहीं है और उसको cash में convert करना है. बहुत simple easy understanding है यहाँ पे current assets का. So current assets consist of cash and other assets or resources commonly identified as reasonably expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of the business. तो मुझे सबसे जो important लगा यहाँ पे, this is this line, which is during the normal operating, सबसे important चीज यहाँ पे cycle. तो इसी cycle को हम आगे लेके समझते हैं कि ये cycle है क्या. जैसे कि आपने कैश से इन्वेंट्री खरीदा, उस इन्वेंट्री को आपने प्रोडक्शन पे डाला, और जब वो प्रोडक्शन चलता रहा तो वो वर्क इन प्रोग्रेस बना. वो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब इन प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वर्क इज इन प्रोडक्शन, योर रॉ मटेरियल्स आर इन प्रोडक्शन ओवर हियर. वर्क इन प्रोग्रेस के बाद वो फिनिश गुड्स बना. फिनिश गुड्स के बाद जब आपने उसको बेचा तो आपने उधारी पे बेचा, क्रेडिट पे बेचा. जब आपने क्रेडिट पे बेचा तो वो रिसीवेबल्स बन गया. रिसीवेबल्स को यानी कि आपके जो डेटर्स ने जब आपको पैसे दिए तो वो कैश में दिए और वो कैश कन्वर्जन हुआ, तो वो कैश को दोबारा आप इन्वेंट्री खरीदते हो उस कैश से. तो ये साइकिल चलता रहा, इसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल, एक ऑपरेशन खत्म होने का साइकिल. ठीक है. सो इफ द साइकिल इज लेस देन 1 year,
1 year is the period that is used for segregating the current from non-current assets. It's just one small thing you just have to remember. There's a reason why we just keep it short and easy, nice and simple. When we say an asset is classified as current on the statement of your financial position, if it is expected to be realized within the entity's operating cycle or 1 year, whichever is longer. So that's the most important thing over here, is that whichever is higher, whichever is on a higher side. If your operating cycle is for 1.3 years, then you will take 1.3 years as the normal operating cycle. कुछ examples यहाँ पे है, which you guys can see clearly. Cash and cash equivalents, certain individual investments in trading available for sale, HTM debt securities, and receivables or inventories, prepaid expenses, and so on and so forth. Now, talking about the non-current assets, very simple, straightforward. Just understand that these are those assets which are not in a rush to be sold, right? So we don't classify them as current because we are no intention of selling them in the near future. So investments and funds. So देखिए मैंने कई शेयर्स पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि अगले 6 महीने 7 महीने 8 महीने में उसको सेल करने का, कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं थोड़ा लंबा, मैं थोड़ा उसको होल्डिंग करके रखूं और उसको थोड़ा 3 साल 4 साल के बाद अच्छा रिटर्न जब आएगा तब मैं उसको सेल करूंगा. So investment and funds include non-operating items. Now, these are non-operating items. Just keep this thing in your mind that we are just talking about the non-operating items. So what do you mean by non-operating items? So non-operating items refer to the fact that we are basically not using those assets on our day-to-day business operations, right? So investments, right? So let's say funds and investments. So those investments which have been made in mutual funds. Let's say I'm a manufacturing entity and I have invested a few things, a few of my money in some stocks and mutual funds and all. Does my investment in any way hamper or enhance my manufacturing process? No. ये कोई भी किसी भी किस्म का एक इम्प्लीकेशन या कोई भी किसी भी किस्म का फायदा या नुकसान मेरे बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर नहीं कर रहा है, which makes sense, and which is very obvious the reason why we call it as non-operating items, which is intended to be held beyond a year or beyond longer of 1 year or one operating cycle. इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है यहाँ पे, नॉन करंट इक्विटी एसेट्स का भी यहाँ पे आप देख सकते हो. फंड्स restricted as to the withdrawal or use for other than current operations, right? Let's say, for example, you retire the long-term debt or satisfy the pension obligation, which is why we would be learning something which is related to defined benefit obligation, DBO, and then pay for the acquisition or construction of the non-current assets. Very straightforward, easy, simple to understand. And there are a few other kinds of non-current assets as well. If this is again something which is relating to property, plant, and equipment, we call it as fixed assets. If you call this as fixed assets, then this is something which we just could term it as long-term investments. Yeah, we just call it as long-term investments. So जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो करंट एसेट्स का एक पार्ट होता है, सिमिलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एक नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है, और वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स एक अलग किस्म का एसेट होता है जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, दिस इज नोन एज PPE. So what do you mean by PPE? PPE stands for a rental, not a rental, sorry, a fixed property, such as land, building, apartment, or whatsoever may be. Plant refers to your manufacturing plant or your manufacturing entity. Equipment refers to those equipment such as furnitures, fixtures, and so on and so forth, right? So what you do over here is that these items are always reported net of any accumulated depreciation, all right? So they include the land and natural resources, buildings, equipment, furniture, fixtures, leasehold improvements, land improvements, and so on and so forth. There are tons of examples. It's not just restricted to what you see over here, but there are tons and tons of examples as well. Just a moment, right? So now what else do we have? We have the intangible assets as well. So intangible assets are basically, you can say that we can term it as intangibles, which is
which is not something which you can see or you can touch or you can feel, but that means they do not have any physical existence, or they do not have, they have an existence but they don't have physical substance. ये तो गलत होगा बोलना कि उनका सर कोई existence ही नहीं है। तो अगर existence नहीं है तो उसको हम asset कैसे बोल सकते हैं, उसको हम intangible कैसे बोल सकते हैं? नहीं, it's not that they are not existing, they are there. Let's say you have patents, you have trademarks, you have copyrights, secrets, formulas, or maybe goodwill as well, the most important intangible ever, right? But then you can't say that they don't exist, but they do not have a physical substance at all. Now, what else do you have? You have other non-current assets as well, such as your. Now, this is again miscellaneous, right? जैसे कि हमने deferred tax liability हमने यहाँ पे देखा था, deferred income taxes liabilities के अंदर देखा था, वैसे ही आपको deferred income taxes assets के अंदर भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो deferred वाला जो deferred tax होता है, ये deferred tax दो कैटेगरी का होता है, ठीक है ना? ये जो deferred tax होता है, so you have two categories. One is your DTA and the other one is your DTL. DTA जो है वो deferred tax asset non current assets के अंदर आएगा। DTL जो है वो deferred tax liabilities non current liabilities के अंदर आएगा। Very simple and very easy to understand. Right? अब आगे इसके ऊपर हम deferred taxes के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि obvious सी बात है, we are going to have a separate reading and a separate session for the deferred taxes, just the deferred taxes. We should have definitely a deferred tax asset and a deferred tax liability. Any question, guys, as of now? Yes? All right. So since you don't have any questions, we are going to proceed. Just give me a moment. All right. So right now we are getting into understanding what are the current liabilities. So सबसे important चीज जो है यहाँ पे समझना current liabilities और current assets के बीच में जो difference जो है. And the difference over here is where we are trying to understand that in assets we are on the verge of conversion from an asset into cash. तो हमें cash मिलने वाला है, हमारा cash inflows होने वाला है. बट यहाँ पे जो करंट लाइबिलिटीज उसका उल्टा हो रहा है कि एक साल या एक ऑपरेटिंग साइकिल विच इज लॉन्गर, उसके अंदर you are converting your liabilities into cash. That means you are letting the cash to go out of your organization. That means that results in a cash outflow. ठीक है? So important चीज यहाँ पे है current liabilities are obligations whose liquidation is reasonably expected to require the use of our existing resources, properly classifiable as current assets or the creation of other current liabilities. So इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। इनका ये कहना है कि सर आपके पास सर $5 ऑफ करंट लाइबिलिटीज है। ये $5 ऑफ करंट लाइबिलिटीज को आपके बैलेंस शीट से हटाने के लिए या तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप $5 के करंट एसेट्स को स्पेंड करो और $5 के करंट लाइबिलिटीज को कैंसिल करो, या फिर आपके पास और एक ऑप्शन है, आप $5 के न्यू करंट, मैं एनसीएल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, आप नया करंट लाइबिलिटीज ले लो और पुराने वाले करंट लाइबिलिटीज को कैंसिल कर लो। बस यही कह रहे हैं वो। सिंपल सा चीज है यहाँ पे। एक सेंटेंस में पढ़ोगे तो शायद कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट यहाँ पे ऐसे समझोगे तो इट्स गोइंग टू बी मच मोर इजियर। Current liabilities are obligations whose liquidation is reasonably expected to require the use of, either ways, you use your existing resources, you use your existing $5 of assets and retire इस करंट लाइबिलिटीज को कैंसिल करो अपने $5 करंट एसेट्स को लेके, या फिर $5 करंट लाइबिलिटीज नए ले लो और पुराने वालों को हटा दो। ठीक है? Everything else is still the same. Current liabilities include the trade payables. Trade payables refer to your creditors and other payables as well. Other payables could be those people who are not outside the organization, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे सैलरीज देना पड़ता है, रेंटल्स देना पड़ता है, रॉयल्टीज देना पड़ता है, एंड सो एंड सो फोर्थ, वेजेस देना पड़ता है एंड ऑल. Then again, you have your unearned revenues. So when it comes to unearned revenue, it means very obvious that means you have received the money, but you have not provided the services yet. So you have received money in advance. So the best example over here refers to prepaid SIM card.
Right. So prepaid SIM card over here is an example where from a telecom company perspective, they're collecting money from you in advance on the first day of the year. And let's say you have gone for a 12 months pack. या आपने कभी रिचार्ज किया होगा इंटरनेट रिचार्ज अगर आप करते हो तो 12 महीने के लिए इंटरनेट रिचार्ज करते हो 24 मंथ्स के लिए आप फुल पेमेंट एडवांस में कर लेते हो 2 साल के लिए मेक सेंस right? So that means the company receives the money in advance but they have not provided the services yet. तो उनके लिए एक किस्म का लायबिलिटी हो गया जो कि 1 साल के अंदर पूरा करना है ठीक है so what else do we have other current liabilities include short-term notes given to acquire capital assets or payments on the current portion of the serial bonds सिंपल चीज है मगर आपको शायद सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि करंट पोर्शन क्या है सीरियल बॉन्ड्स क्या है जैसे सीरियल किलर के बारे में सुना है सीरियल बॉन्ड्स क्या है तो ये सारी चीजें ना हाँ सीरियल बॉन्ड्स भी वैसे सीरियल किलर की तरह ही है क्योंकि एक 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 जैसे कि एक के बाद एक सीरियल किलर जैसे क्राइम कमिट करता रहता है तो सीरियल बॉन्ड्स भी एक टाइम पीरियड के लिए रहता है जहां पे आपको हर साल आपको पेमेंट्स करना पड़ेगा ठीक है ना सो दैट्स अगेन payments on a current portion of the serial bonds or other non-current debt would be some kind of a bank or it could be on a very short-term basis right it could be a cash credit or it could be an overdraft facility it could be any of those but none of these things would be considered as a long-term would be considered from a long-term perspective. Rather, it's going to be considered from a short-term perspective only. So, but on the other side, if you say that non-current obligations callable by the creditors, now it's going to be a little bit difficult for you to understand if you have not gone into that side of understanding now what is callable, what is putable, and all. तो हम यहाँ पे callable bonds या putable bonds या call options या put options के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं. So we're just saying that non-current applications callable. Callable मतलब क्या कि creditor बोल रहा है कि आओ हमें हमें अभी इसी वक्त पैसे दे दो. क्यों क्योंकि शायद आप डेटर हो और आपका क्रेडिटर बोल रहा है कि आपने कोई वायलेशन किया हुआ है कुछ ये किया हुआ है कुछ कवेनेंट वायलेशन किया हुआ है now what do you mean by covenant over here covenants refers to some kind of rules and regulations which you have to adhere to इसको जस्ट हल्के में इसको बस आराम से इसको समझो कि these are just nothing but these are some rules जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि आप एक घर लेते हो 6 महीने के लिए 1 साल 5 साल के लिए घर लेते हो उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रूल्स होता है कि आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे सो वैसे ही जब आप कुछ किसी से पैसे उधार लेते हो या एक एक लेंडिंग आप बोरो करते हो किसी लेंडर से बॉन्ड्स के तरीके से हो या किसी भी तरीके से हो आप अगर बोरो करते हो तो वहां पे कुछ रूल्स होता है यू हैव टू adhere टू और यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स if you don't follow those rules and it could be considered as a violation of those rules and when you do that then of course it's going to be it's again leading to a debtor's violation some of the rights of creditors are going to be violated. If the creditor's rights are violated, then the creditor may call upon. वो call upon एक किस्म का कॉल करके बोलने का कि सर तुमने वायलेट किया हुआ है और आज मुझे अपना पैसा सारा पैसा वापस दे दो तो ऐसे भी हो सकता है कि नॉन करंट ऑब्लिगेशंस ठीक है ना so current liabilities do not include you can just give it a rating it's very simple straightforward intend to refinance them on a non-current basis तो वहां पे आप current liabilities को मान नहीं सकते हो कि आपका इंटेंशन है कि एक 6 महीने का लोन को खींच के 3 साल तक लेने का अगर वैसा है then of course definitely you are not going to take that as a current liability or maybe you are having an ability or an intention to do so or you're demonstrating an ability to do so is as well you would not you would not cover that as your current liability क्योंकि आपको यहाँ पे from an accounting perspective से समझना है ability to refinance may be demonstrated by entering into a financing agreement or you are issuing a non-current application or equity securities after end of the reporting period. Okay. So just give it a reading. It's not too much important, but however, you can just have a reading for your reference for your understanding. Now, getting into understanding the non-current liabilities in detail. So here, you're just looking at
The non-current liabilities are those which are not qualifying as current. So the non-current portions of the following items are reported in this section. So understand for a fact that there is a separate section which you have to keep in your mind, and that's basically non-current liabilities में क्या क्या आता है. There is non-current notes and non-current bonds, right? So non-current bonds means these are those bonds which have no intention to be paid off in just 1 year's time. ये हमेशा याद रखना कि सर हमें 1 साल के अंदर कोई भी पेमेंट नहीं करना है, या हमें 1 साल में सिर्फ 1 ही साल का पेमेंट करना है. ये सीरियल बॉन्ड्स की तरह कंटिन्यूअल नहीं होता है. इसका एक टाइम पीरियड रहता है, वो हमेशा 1 साल से 2 साल से 3 साल से ज्यादा रहता है. ठीक है. देन लीज लायबिलिटीज ओवर हियर, मोस्ट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट obligations under the product or service warranty agreements, advances for non-current commitments to provide the goods and services, and then deferred revenue, so on and so forth. ठीक है ना. अभी again I would just, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कांटा लगाऊंगा कि क्योंकि हम यहाँ पे deferred tax assets और deferred tax liabilities के बारे में हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, because of course we just know for a fact that what's going to be the treatment. The treatment is always going to be non-current over here. And then moving on to the last but not the least, the most important part, which is known as equity. Equity requires you to understand that it's not just a part of the balance sheet, rather it's going to be considered as a residual value. इसको हम क्या कहते हैं? Residual value बोलते हैं. बहुत सिंपल है यहाँ पे समझना कि सर एसेट्स में से आपने अगर लाइबिलिटीज हटा दिया, जैसे कि मान लेते हैं कि सर आपके पास $50 ऑफ एसेट्स था, उसमें से आपने $35 का, या लेट्स से $45 का आपने अगर लाइबिलिटी हटा दिया, तो आपके पास जो बचता है वो $5. दिस इज बेसिकली योर रेसिड्यू. इसका मतलब क्या है? You are owning $50, you are selling those assets, you're owning assets worth $50, you're selling those assets, and then you are left with just $45 you're left with $5 of assets in the end. That's basically your share. You can say it's your share, or you can say that is the remaining value or residual value, right? So after all the liabilities are subtracted from the assets, then the remaining thing or the remaining figure is known as what? Is known as equity. बस इतना ही आपको समझना है और याद रखना है. इसी तरीके से आपको इस चीज को इंटरप्रेट करना है. जैसे कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, हाँ, इसमें क्या होता है कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स आता है, विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड्स, देन यू हैव एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, AOCI. ठीक है. अब accumulated other comprehensive income में ऐसा क्या है, और उसको accumulate, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है कि सर हम इसको accumulate कर क्यों रहे हैं, ये सब के लिए आपको और 2 रीडिंग्स तक वेट करना पड़ेगा. यानी कि 1.3 या 1.2 में आपको समझ में आ जाएगा कि OCI में एक्चुअली होता क्या है, और ऐसा क्यों होता है कि हम इसको सेपरेटली बैलेंस शीट में, एक वर्ड मैं आगे बोलूंगा, मैं अभी तो बोल नहीं रहा हूं, but we are going to use this word known as park. We are going to park our funds over here. It's just like, it's not a park where you just, we can't say that. It's not something like you're walking on the park, or it's like a walk in the park, or you can't say that it's a children's playground, or it's not that kind of a park, but it's where ये जो गाड़ी को जैसे पार्किंग करते हो ना, तो वैसे आप फंड्स को एक जगह पे आप बैलेंस शीट में पार्क करके रखते हो, तो उसको फ्यूचर में यूज करना है, तो इसको हम पार्किंग कहते हैं. तो वो वाला पार्क है ये. So accumulated other comprehensive income, where your certain funds and certain items which are there in your OCI are actually going to be parked, is going to be parked in the balance sheet to become accumulated. So you guys, what you would be doing, I'm just removing all these things because it's not needed at the moment. So what you would be doing is that you are going to park all the funds over there and accumulate it together, and then those accumulations is going to be there on your balance sheet, right? So the non-controlling interest in the consolidated entity, of course we are not going to talk about anything related to non-controlling interest at the moment. However, you just need to understand that if there is company A who has acquired, let's say 70% of companies B shares, then the remaining 30% shareholders, right? So remaining 30% shareholders, remaining 30% shareholders of B.
Remaining 30% shareholders of B are basically known as what? We call it as MI, minority interest, right? So minority interest के भी जितना भी shares होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे show करना पड़ेगा as a part of your equity, right? So then again, just keep that in your mind. All these things are going to be talked again in study unit number 12, and I would be also showing you what is there in study unit number 12, just for your understanding. Let's go back over here, and we just go back into the menu which has all these study units as well. So just give me a moment. All right, if you go into study unit number 12, which is basically equity, inside equity, you'll be learning things related to treasury stock method, or let's say things related to yeah, so treasury stock, again, acquisition, reissue, stock warrants, again, classification or classes of equity. What are the different? कुछ theoretical होगा, कुछ practical होगा, कुछ numerical होगा. Retirement of stock, that's where you say that you are going to buy back the stock, or cash dividends, property dividends, liquidating dividends, stock dividend and stock split. ठीक है? क्योंकि हम अभी शुरू से हम ये सब नहीं कर रहे हैं, because it's going to be a little bit difficult, because we are building the foundation. In the first few classes, what we will be doing is that we will be building the foundation. हम लोग शुरू से, जैसे कि हम बैलेंस शीट के बेसिक समझाएंगे. अब जो हम करने वाले हैं, that is we are getting into the next reading, which is 1.2. If you can see over here, this is exactly where we were right now at the moment, and we are done with 1.1. We are moving all the way to 1.2, which is statement of income. Now let me go back and show you the progress. If we go back here, then हम यहाँ पे क्या क्या किए हैं अभी शुरू में. We are done with 1.1. We are getting into the statement of income. Now remember, I told you it's in 1.3 or 1.4 somewhere. You will be learning comprehensive income, और जब comprehensive income पढ़ोगे उसी टाइम पे आप other comprehensive income के बारे में भी पढ़ोगे. Right now we are getting into 1.2. Now, reading number 1.2 is basically letting you know the statement of income, or they are just giving you a bit of a background over here. That is, accounts presented on the balance sheet are real or permanent accounts, right? So if you might have heard before, there are three kinds of accounts: real account, nominal account, and then your personal account and as well. Now, whenever you are getting into the real accounts, these are the ones which come inside the balance sheet. We are not getting too much into the basics, जो कि 11th standard or 12th standard के basics, वहां तक भी इतने भी हम CP आपको उतना basics तो नहीं train करेगा, but definitely at least they will help you understand the minimum requirements for you to read the income statements or prepare the income statements, because over here we are not learning from an analysis point of view. Rather, we are trying to understand, learn from a preparation perspective, from preparation point of view, कि आपको हम उतना काबिल बनाएंगे कि आप बैलेंस शीट को बनाना सीखो, उसको इनकम स्टेटमेंट को बना सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बना सकते हो या प्रिपेयर कर सकते हो. That's exactly how we would be going. Right, they report on entities, resources, and financing elements that exist from period to period. And of course, the accounts presented on the income statement are what? They are the nominal accounts. So we don't understand. We have never read things related to temporary accounts or permanent accounts. India में हमें वैसा सब नहीं सिखाया गया है. But of course, we know that they are either ways nominal, right, or they are real account, right? So this is how it has worked all the time. Now, what exactly is the nature of the income statement? So first things first, right? So we just try to understand, we just try to read a little bit about knowing the nature. Say income statement क्या है, income statement का objective क्या है, उसका purpose क्या है, right? So they are basically prepared. First of all, when are they prepared? They are prepared for a particular period. They're not prepared for a particular date. They are prepared for a particular period. It's nothing but it's a statement for a particular period. So एक period हो गया, जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि Jan 1st 2024 से लेके December 31st 2025 and so on and so forth.
blah, blah, blah. Right. So nature of your income statement. The results of operations are reported in the income statement on the accrual basis using an approach oriented to historical transactions. Right. So it is always going to be prepared on an accrual basis. Now, always remember that this is exactly the reason why we do the accounting, why accounting becomes so complicated, so difficult, because not everyone in the world know what is the meaning of accrual concept. An accrual concept is nothing but it's just the opposite of cash concept. कि जैसे कि हर एक जगह एक बिजनेस मान के चलो, अज्यूम करो कि सर एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सारी चीजें कैश में होता है, या कैश में या तो आप खरीद सकते हो या कैश में आप सिर्फ बेच सकते हो, या बैंक ट्रांजैक्शंस में आप खरीद सकते हो, बैंक ट्रांजैक्शंस में आप बेच सकते हो, उसमें उधारी वाला जमाना है नहीं। बट एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाता है कि आप क्रेडिट में खरीद सकते हो, क्रेडिट मतलब उधार, उधारी से खरीद सकते हो और आप उधारी से भी बेच सकते हो, यानी कि आप क्रेडिट से खरीद सकते हो, क्रेडिट से आप बेच सकते हो। So the results of operations are reported in the income statement on accrual basis using an approach oriented to historical transactions. We'll be talking about that in a moment. That's where we are looking at the traditional income statement, which is reporting revenues from and expenses of the entity's major activities and the gains and losses. Now, the most important thing over here, right? So what are we learning over here is that it reports the revenues from how much was the sale proceeds. So इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, or maybe I should write it down over here clearly. That revenues refer to what? It refers to sale proceeds, or you can just write down as proceeds, right? Right, so these are the proceeds, and expenses refer to those disbursements, those payments, right? So we can just write down over here as expenses means that we are referring to payments which has been made, or payments which should be made later. So we just look at the payments over here. So पेमेंट्स कि क्या क्या आपने सब पे किया हुआ है, क्योंकि आपके कुछ कुछ एक्सपेंडिचर्स हो गए, कुछ कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स पे आपको मिल जाएगा, एक्सपेंसेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। gains and losses, the most important thing over here is that gains यानी कि profit, losses यानी कि उसको लॉस को लॉस ही बोलते हैं, उसको क्या ही बोलेंगे आप। तो losses from other activities मतलब कभी कभी सेल हो सकता है, कुछ आप बेच सकते हो, कुछ आप खरीद सकते हो, उस हिसाब से। So if you want to put it inside one equation, let me try to put this thing in one equation, that is revenues minus expenses plus your gains minus your losses. Always remember, just keep that in your mind, that your gains will always be added. Gains will always increase your income, and revenues will also increase your income, whereas your losses will always pull your income down. तभी तो जाके यहाँ पे आपको negative sign आपको देखने के लिए मिल जाता है। Now, just again, going into the accounting basics, which I really don't suggest that you should be reading this at all at the moment. जब आपने CPA करने के लिए सोचा है, और जब आप CPA करने के बारे में सोच रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए that income statement elements are reported in the temporary or nominal accounts. तो हमें temporary समझ में नहीं आता है ज़्यादा, तो हमें क्या समझ में आता है सर? Nominal versus real. ठीक है? So nominal accounts that are periodically closed to the permanent or real accounts. The accountant need not close each transaction directly to the equity, right? So again, net income or loss for the period is closed to retain earnings at the end of the period. It's very obvious. We have an equation, and that equation is what I had written before over here, right? So profit after tax minus the dividends is nothing but your retained earnings, right? So this is exactly what it should be. And now again, if you want me to write it down again, I can write it down over here. It is profit after taxes. Profit after taxes क्या है सर? ये जो है आपको निकल के आएगा profit after taxes. So this is your net income. Net income is nothing but your profit after taxes. So profit after taxes minus your dividends. Profit after taxes minus your dividends will get you what? Is going to get you the retained earnings.
All right, very simple and easy, straightforward to understand, and no complications involved at the moment. Okay, so it's very easy to understand. So net income or the loss for a period is close to the retained earnings. Yes, some people may be wondering, like, say, ऐसा क्या लिखा हुआ है? It's close to the retained earnings. इसका मतलब ये है कि सर आप ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आपको डिविडेंड्स पेमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, डिविडेंड्स पेमेंट नहीं करना है, तो पूरे के पूरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द retained earnings. Any recognized amounts not included in the continuing operations are reported in a separate section. So let's say, for example, you have some operations which you have shut down and you're not doing it at the moment anymore. It's not in continuation, right? So that's exactly what happens when we say that. Is it in continuation? We say no, it's not in continuation at the moment, right? So that's again, we call it as we keep it in a separate account which is known as discontinued operations, and that's again reported in a separate section. क्या चीज? So कोई भी चीज जो any recognized amount which is not included in the continuing operations, just keep that in your mind. That we would be showing you the income statement, a sample income statement, as you guys can see over here. But before we get in there, that just know this, that if something which is not in operation, or there is a shutdown which has happened, or it's not a usual part of your business daily operations, then we would be calling it as it is continued operations, right? So transactions not included in the net income are what? Transactions with the owners, error corrections. Why? Because these things are directly going to retained earnings. Items reported initially in the OCI, obviously बात है, क्योंकि ये सर OCI जो है ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं आएगा ये, ठीक है? So then transfers to and from appropriated retained earnings and effects on the prior period changes because of accounting changes, right? Now, let's have a look at there are three types of formats which we have in the income statement. One is known as your single step format, जो आपकी स्क्रीन के सामने है. I'm just going to show you. The next one which you have is your multiple step format, right? So I would be also giving you the difference between these two. And then you have a condensed one. Condensed one is very straightforward. ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसा लाइन आइटम्स नहीं है. आपने ये बहुत ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द इनकम स्टेटमेंट्स है, जहाँ पे आप कंडेंस्ड फॉर्म पे, यहाँ पे आप एक्सपैंड नहीं कर रहे हो, उसको कंप्रेस करके आप यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताते हो कि ये मेरा नेट सेल्स है, ये मेरा नेट इनकम है, ठीक है? Then we'll be getting into some equations and so on and so forth. I actually didn't show you what we'll be learning over here in this topic, right? So yeah, I actually forgot. I missed it, right? I missed it. So what you will be learning? Okay, now as you guys already know a little bit about the nature of income statement, so you will be getting into the income statement format. यहाँ पे थोड़ा formats के बारे में जैसे मैंने आपको अभी बताया, तीन फॉर्मेट्स जब आप सीखोगे, सीखने के बाद आप थोड़ा कुछ फॉर्मूला सीखोगे, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, मोस्ट ऑफ यू आर आल्सो अवेयर ऑफ इट. एंड देन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है, और सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है, कुछ एक्सपेंसेस के बारे में आप यहाँ पे इस रीडिंग पे सीखोगे. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में मैंने ज्यादा नहीं बताया उस टाइम पे जब मैं अभी बता रहा था. द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज वी हैव अ सेपरेट study paragraph over here, or you have a separate learning outcome statement for discontinued operations where we will be talking more in details. उसका टैक्सेस का क्या सीन है, ज्यादा टैक्सेस का हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स वी हैव एन एग्जांपल फॉर द डे and we'll be looking into this example as well. And then again we will be getting into 1.3. So it's a nice way where we will be ending our learning for 1.2 with a very not really a complicated but a simple and an easy example over here. सबसे पहले अब जब हम यहाँ पे अटक गए हैं, हम इसको पहले खत्म कर दें. Let's finish off ring number let's finish off the three different types of your income statement format, right? So three formats that are commonly used. Now just keep that in your mind. The first format is known as the single step income statement format. The second format over here is the multiple step income statement format. Just need to remember the names. And the third one is condensed. So we'll be looking into the condensed income statement format as well. And आपको बस नाम याद रखना है और आपको differences याद रखना है. We don't see any kind of a testability in terms of questions over here, but of course we have to know what are the different kinds of formats over here. Now the single step format, right? So it provides one grouping for revenues and expenses and one for expenses and losses.
वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल है यहाँ पे, बहुत इजी है यहाँ पे। रेवेन्यूज एंड गेन्स, यहाँ पे आपने सारे रेवेन्यूज और सारे गेन्स को यहाँ पे लगा दिया। शायद ये नॉन ऑपरेशनल भी हो सकते हैं, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, इट कुड बी नॉन ऑपरेशनल एज वेल। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये दोनों जो है, सॉरी, ये दोनों जो है ये सर नॉन ऑपरेशनल है, ये आपके बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आए हैं। मगर हमें किस चीज का फर्क पड़ता है, हमें कुछ नहीं, हमें तो बस सिंगल स्टेप में लेना है इसको, ठीक है। और ये जो है हमारा नेट सेल्स जो है हमारा, ये मेरा ऑपरेशनल इनकम है। यहाँ पे ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल वैसा कुछ नहीं है, सब सारे के सारे गेन्स को मिलाओ, सारे के सारे एक्सपेंसेस को मिलाओ, और रेवेन्यूज और गेन्स को इकट्ठा करो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को एक साथ टुगेदर आप यहाँ पे मेंशन करो, और जो भी हाया माइनस करने से वो आपका नेट इनकम। ये किस्म का सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं, जो कि मल्टीपल स्टेप ऑफ इनकम स्टेटमेंट होता है। मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट में आप यहाँ पे जो चीजें हैं, पहले आप रेवेन्यूज, रेवेन्यूज में पूरा डिटेल्स में आप मेंशन करते हो, कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने सिर्फ नेट सेल्स हमने बताया कि $1,050,000 इज द नेट सेल्स, बट वी डोंट डू दैट ऑन अ शॉर्टकट बेसिस। हम यहाँ पे पूरे, जिसको ज्यादा, इफ यू वांट टू have a better representation of income statement, you want to show the income statement in a much more detailed manner, then in that way you have to show what's the gross sales, what's going to be the sale discount, sale returns, कभी कभी discounts हो सकता है, कभी कभी returns and allowances, ये सब आपने पहले वाले स्टेप में यानी कि पहला फॉर्मेट में आपने कुछ भी नहीं बताया, यहाँ पे आप सारे बताते हो। then you say that it's going to be $1,050,000 over here. And in the again in the single step format, you just wrote that the cost of goods sold is how much. You just mentioned that the cost of goods sold is around $820,000. मगर ये $820,000 सा आया कहाँ से? ये यहाँ पे जब आप मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सर 820 कितने सब करने के बाद आता है। जैसे कि बिगनिंग इन्वेंट्री होता है, परचेजेस माइनस रिटर्न्स एंड डिस्काउंट, सो it's going to be, you can say that it's much more it's much more kind of an expanded format of your income statement. It's not really a condensed, so you can't say condensed, but then it's not grouped. In the previous format it's grouped, in single step it's grouped, but in a multiple step it's much more expanded, right? So again you have lots of different expenses, ये सारे के सारे यहाँ पे हर single line item में सिंगल आइटम को इन्होंने एक्सपैंड करके डिस्क्राइब करके इन्होंने मेंशन किया हुआ है। But if we go back to the condensed income statement, which is again, it includes only section totals of the multiple step format. एक advanced version है, not an advanced, but it's a modified version of multiple step, क्योंकि multiple step format कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि net sales को compress किया, cost of goods sold को compress किया, इन्होंने gross profit, then income from operations में revenues, gains एंड अदर रेवेन्यूज, अदर गेन्स, जो ऑपरेशन के पार्ट में नहीं जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आता है सर? ऑपरेशंस वाले इनकम आते हैं $82,000, ठीक है। नॉन ऑपरेशन वाले कितने हैं? सो $1,075,000 हैं यहाँ पे, जो चूंकि ऑपरेशन के पार्ट है ही नहीं, ठीक है ना। सो इट्स अनदर वे इन विच यू आर कंडेंसिंग एवरीथिंग, बट यू आर नॉट मिक्सिंग अप। तो सिंगल स्टेप फॉर्मेट में क्या था, आप सब कुछ मिला देते हो, ये ऑपरेशनल भी एक जगह पे है, नॉन ऑपरेशनल भी एक जगह पे है, सारे चीजें मिलाते हो, सारे एक्सपेंसेस मिलाते हो। मगर कंडेंस फॉर्मेट में क्या करते हो, आप मिलाते नहीं हो, आप सिर्फ उसको थोड़ा कंडेंस करके आप एक लाइन में, या थोड़ा छोटा फॉर्मेट आप यहाँ पे यूज करते हो, एज कंपेयर टू द मल्टी स्टेप विच इज एक्सपेंशनरी फॉर्मेट, राइट। Now, again, we have a success tip over here, which is prescribed by 𝐂𝐦𝐚 for you guys to take note of. Previous CPA examinations have included questions with cost and inventory information that require candidates to calculate the cost of goods sold. ये सिर्फ मैं आपको एक honest fact में आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा point है इन्होंने यहाँ पे mention किया हुआ है, that they have mentioned that candidates were asked to calculate the cost of goods sold or cost of goods manufactured. Actually, it's not just CPA examinations, let me tell you. It's not just the CPA examinations. You just get into any professional examination and you just go there where they teach you all these things, they will definitely ask you the questions related to cost of goods sold, cost of goods manufactured, and so on and so forth.
आप कॉस्टिंग वाले एग्जाम ले लो, सीपी एग्जाम्स ले लो, सीएफ एग्जाम्स ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है, कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रेड एग्जाम्पल भी ले लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये एक ऐसा चीज है जो कि सबके लिए टेस्टेबल होता है, रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटसोएवर योर एज में बी, व्हाटसोएवर योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस में बी। आप कोई भी पोजीशन पे जाओ इंटरव्यू के लिए भी आपको ये चीज पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। So cost of goods sold equals to the purchases for a retailer or the cost of goods manufactured for a manufacturer. We'll be getting into this in a moment. First of all, what you have is beginning finished goods inventory. Now, this is what we call it as you can say, the opening stock. I call it as opening stock finished goods. All right. Then you have some purchases. Purchases is basically your additions, right? So plus your additions. मैं आपको शॉर्ट में लिखता हूं कि आपको इजी होगा याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर गुड्स अवेलेबल, ठीक है, गुड्स अवेलेबल। ठीक है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस योर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, देन योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम कॉग्स बोलते हैं, ठीक है। Just need to center this one a little bit more over here, right? So yeah, एक शॉर्टकट तरीका है याद रखने का, आप वैसे याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप एक ट्रेडिशनल वे में अगर याद रखना चाहते हो तो भी ठीक है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक विच इज बिगिनिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी प्लस परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विच इज बेसिकली वी कॉल इट एज एन एडिशन, कि क्या एक्स्ट्रा आपने ऐड किया हुआ है। ये सर मेरे पास जो है ये कीबोर्ड है सर, मेरे पास कीबोर्ड मैंने ऑलरेडी 15 मैन्युफैक्चर किया हुआ है और मेरे ओपनिंग स्टॉक गोडाउन में ऑलरेडी 50 कीबोर्ड्स पड़े हैं, तो मैंने और 15 मैंने ऐड किया, टोटल बन गया 65 कीबोर्ड्स में से मेरे क्लोजिंग है सिर्फ 10, तो मैंने कितना बेचा, 55 का बेचा मैंने। 55 कीबोर्ड्स मैंने एक एक साल में, एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में मैंने बेचा, ठीक है। सो दैट्स एक्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू गाइस so we don't miss this out at all. That is cost of goods sold. Cost of goods sold is referring to what the purchase is for a retailer, or the cost of goods manufactured for a manufacturer adjusted for the change in the finished goods inventory, right? Very simple and easy to understand. Now, what do you mean with the cost of goods manufactured over here? So cost of goods manufactured refers to your all the beginning, work in progress and all these things, right? So अलग अलग तरीका है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने का, ठीक है। आप यहाँ पे एडिशंस को मैं यहाँ पे सीओजीएम में मान के चलता हूँ, तो मैं इसको ब्रैकेट में सीओजीएम भी लिख सकता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आप यहां से भी निकाल सकते हो, आपके पास ये है, ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, और मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं निकाल सकता? डेफिनेटली मैं निकाल सकता हूँ, बहुत ईजी है। तो वही चीज यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ऐसा, उसको बस इक्वेशन को अलग कर दिया। मैं वैसे कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास अगर फिगर है, आपको पूछा गया है तो उसको एक्स ले लो, कि जैसे कि मेरे पास 50 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स हैं, मुझे पता नहीं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, मेरे पास 10 यूनिट्स ऑफ, मेरे पास क्या है, 10 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने जैसे कि 55 यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स को मैंने सेल किया हुआ है, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट? आई मीन यू जस्ट पुट इट इनसाइड एन इक्वेशन। कॉस्ट का इक्वेशन क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आपको आपको x पता है कि यहाँ पे x है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सर मैंने क्या किया कि क्लोजिंग स्टॉक्स प्लस कॉग्स को मैंने ले लिया 55, कि मेरा कॉग्स है 55 माइनस 50, ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्व करके आप x निकाल दो, सिंपल है। यहाँ पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम नहीं कर रहे हैं, बरसों पहले, hundreds of years back people used to use equations, algebraic equations.
It may sound like, sir, क्या आप you are a CPA US, you are a CPA Australia, you have completed all these qualifications, you have also done this, and then even at this age, you have this much years of experience, and then you are going back into the traditional form. Yes, जब एक जमाना था, एक टाइम था, जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था महेंद्र सिंह धोनी का। So someone asked him that कि आप ऐसे कैसे विकेट कीपिंग कर लेते हो, ऐसे कैसे कर लेते हो, आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट कीपिंग है। देन द आंसर व्हाट ही गेव वाज, सर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया सालों भर। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस इंटरव्यू और नॉट। वो कई जगह पे वो ये बोल चुका है कि वर्षों पहले, सालों सालों पहले लोग विकेट कीपिंग करते आए हैं। माय विकेट कीपिंग इज वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड जस्ट द वे दे डू, आई एम डूइंग इट। It's just that you are finding it extraordinary, but it's not that. It's just the way where I mean, just the way it has been done. I'm just doing it in that way. तो वैसे ही हाँ, आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मूलाज याद रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मूलाज याद रखने का। आपको बस सिंपल इक्वेशन आपको याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और यू कैन से परचेजेस। यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो परचेजेस के साथ, ठीक है ना। या तो अगर आप रिटेलर हो तो आप परचेजेस लिखोगे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लिखोगे, जैसे आपकी मर्जी। क्योंकि आपको सिचुएशन भी देखना पड़ेगा ना सर। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने लगा दिया और वो हर जगह काम करेगा। ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर होगा। अगर आप एक रिटेलर हो तो आप परचेजेस करते हो, क्योंकि आप रिटेल में हो, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आपके पास ऑलरेडी 50 यूनिट्स था ओपनिंग स्टॉक में, आपने क्या परचेज किया जिसके कारण आपके क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना 10 और 55। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, और कुछ नहीं है। तो वही है, उसने जैसे कहा कि सालों भर लोग विकेट कीपिंग करते आए हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आपको यही कर रहा हूँ। मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि सर सालों भर लोग ऐसे फॉर्मूलाज बनाते आए हैं, मगर हम क्या करेंगे, हम सिंपल एल्जेब्रिकल फॉर्मूलाज लेके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में भी वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, हम सिर्फ नाम बदलेंगे। क्या बदलेंगे यहाँ पे, सर हम लिखेंगे कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस सम ऑफ पीरियोडिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि हमारे लिए एक किस्म का परचेजेस हो गया। ठीक है, ये हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग MFR कॉस्ट। दिस इज अ समेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये सब समेशन सिंबल डालने से things may look complicated but it's not that, right? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, वर्किंग लेबर कॉस्ट हो गया, आपका ओवरहेड्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट हो गया। ठीक है ना, ये सारे कॉस्ट हो गया, सारे कॉस्ट आपने मिलाया। ठीक है, माइनस द क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस द क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, WIP will get you what, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि अगले वाले इक्वेशन का परचेजेस निकल गया। सिंपल। यहाँ पे भी ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सॉरी आई शुड नॉट राइट इट डाउन लाइक दिस, rather I should move this thing all the way over here, right? This looks better, and then this should be over here, right? So opening work in progress plus manufacturing cost minus closing work in progress will get you cost of goods manufactured। और यहाँ पे जो भी cost of goods manufactured होके आता है, यहाँ पे जो भी cost of goods manufactured होके आता है, वो जाता कहाँ है, वो इसका इनपुट बन जाता है। तो सोचो यहाँ पे हो क्या रहा है। आगे अगर आप बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, जो कि आपका एक इलेक्टिव टॉपिक है, बार बार अगर आप करोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज गोइंग टू बी द आउटपुट, सो आउटपुट ऑफ दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी द इनपुट फॉर दिस इक्वेशन। वेरी सिंपल, ठीक है। Now, study unit number 6, subunit number 1. Oh, I didn't know that they are terming it as subunit. ठीक है, हम इसको subunit भी बोल सकते हैं, हम इसको reading number भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो study unit number 6, reading number 1 or subunit number 1 contains a more detailed explanation of this topic. So we're not going to stress too much over here, but if you still really want to go back and yes, Vinay, you have a question? If you can just go ahead and I'm sorry, I saw your message right now. All right, any questions, you can just go ahead. All right, study unit number 6, inventories। हाँ, तो inventories में जब आप जाओगे तो पूरे के पूरे डिटेल्स में आप इस चीज को पढ़ोगे। So I don't think so we have to discuss too much over here, but of course inventories would be having these inventory fundamentals definitely। इन्वेंटरी फंडामेंटल्स के अंदर अगर आप वहां पे चाहोगे एंड इसका आउटलाइन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि
ये सारी चीजें वहां पे अगेन द सेम थिंग, just the same thing over here, right? So I hope you guys can see Can I this. ask my question? Yes, please go ahead. So my question was, sir, what is means? Why do we need to record in two separate ways? This whole thing. Why not? Over here we are recording operating and non-operating separately. Why do we need to do that? Why not in one place only? Operating and non-operating. Just give me a moment, okay? All right. So operating, non-operating. So you're talking about the income statement over here, isn't it? Over here, right? Yes. So yeah, okay. So operating, now we are basically taking the operating expenses over here in one place, right? So your question is that why are we not showing it separately, is it? The non-operating expenses, because over here we are showing it separately, right? You can see the other expenses and losses over here are shown separately. It's not a part of your operations. I'm asking why we have to show this separately. Why not? Why we have to show it separately, right? Of course, because यहाँ पे आप देखो कि आपको इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे इस सबको मिला दोगे तो डू यू थिंक योर इनकम इज गोइंग टू बी स्क्यूड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड? जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए आई एम हैविंग माय इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच इज $82,000, करेक्ट? व्हिच मेक सेंस, क्योंकि मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो विद अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये इसका अकाउंटिंग में इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। व्हाट इट मींस इज दैट यू हैव टू मैच योर एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यूज। if you don't match your expenses against revenues, जैसे कि आप अगर जैसे let's say for example you're manufacturing bread, और आप एक ब्रेड कंपनी हो, आप एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, साथ ही साथ में आपने लोन भी लिया हुआ है मशीनरीज खरीदने के लिए, ठीक है ना? आपने मशीन्स भी खरीदा था लास्ट ईयर, जो आपने डिस्पोज किया, लॉस में डिस्पोज किया। आप मुझे बताओ कि आप इनकम दिखा रहे हो $82,000 ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का, अगर आप लोन के जो इंटरेस्ट जो आप देते हो 124,000 को भी अगर इसमें मिला दोगे, तो डोंट यू थिंक आपको अगर कल को कोई पूछेगा सर आपके ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, तो आप बोलोगे नहीं सर हमारा इनकम तो एक्चुअली इनकम छोड़ो, हमारा तो लॉस हो रहा है कि 82,000 प्रॉफिट जो था हमारा, उसमें से हमने 124 का एक अनमैच्ड एक्सपेंसेस हमने ऐड कर दिया इसमें, तो हमारा तो लॉस हो गया 42,000 का। डोंट यू थिंक यू आर वायलेटिंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे आपको But मैचिंग कॉन्सेप्ट, या गो अहेड। if I want to tell it to someone like uh, my cost is this, my profit is this, so why do I need to like show it separately? At the end of the day, मेरा जो इन्वेस्टर रहेगा या कोई स्टेक होल्डर रहेगा वो तो यही देखेगा ना कि मैं कंपनी एज अ कंपनी आई एम मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। तो यस, अलग अलग वो आप तो यहाँ पे सिंपल। बोल सकते हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि $750,000 आपको इनकम देखना है, कि अल्टीमेटली तो आप यहाँ पे माइनस कर ही रहे हो, तो आप यहाँ पे सेपरेट क्यों दिखा रहे हो? मगर दिस इज द फॉर्मेट, राइट? यू हैव टू स्टिक टू द फॉर्मेट दैट यस, हम यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे ऑपरेशनल रेवेन्यूज को एक समान रखते हैं और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को इकट्ठा रखते हैं। So whenever we want to understand, let's say we are doing a year over year analysis, right? So we are doing a year over year analysis से हम देखना चाहते हैं कि लास्ट ईयर सर सिर्फ हमारे ऑपरेशनल इनकम कितने थे और इस साल हमारे ऑपरेशनल इनकम कितने बढ़े हैं। अगर हमारे क्या आइदर बढ़े हैं, अगर आइदर हमारे बढ़ चुका है या गिर चुका है, वो हमें देखने के लिए अगर मैं सारे के सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा करूं, जैसे कि यहाँ पे किया भी गया है, जैसे कि आई थिंक इफ वी गो बैक ओवर हियर नाउ यू सी, if I just add up together, then if I say that, well, how much is going to be my operational income? I don't have an answer for this. If let's say my boss is asking me, or if the shareholders will ask me that from your bread manufacturing, how much was the income which you have earned? I have no answer, because I will say that आप सीधा से सीधा नेट इनकम से मतलब रखो ना, आपको इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से क्या ही लेना है? तो वैसा नहीं हम बोल सकते, बिकॉज वी हैव टू मैच द रेवेन्यूज एंड वी हैव टू मैच द एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यूज। then only we need to find then only we can understand that yes, whether our business operations is on a profitable side or it's on a loss making side, ताकि हम एक डिसीजन बना सके ना कि क्या हमें आगे वो बिजनेस ऑपरेशंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं सारे एक्सपेंसेस को मिला दूं तो मुझे क्या ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है ना? सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कीपिंग इट सेपरेट।
All right. So next up, what you have over here is we are looking at a few of the examples for selling expenses. Selling expenses are incurred in selling or marketing. Now this is very simple and easy to understand, right? जैसे कि selling expenses में commissions वगैरह रहता है, ठीक है? जैसे कि sales representative को हम कुछ commissions देते हैं, उसको incentivize करते हैं, right? So what do we incentivize them? Because we want them that they must achieve a certain target. So if they achieve the target, then of course we have to pay them the salaries, we have to pay them the commissions, and we have to pay them the running expenses, salaries, depreciation, and blah blah blah, whatsoever may be, right? So communication costs and all. So shipping costs may also be classified as selling costs, but it should be always the freight outward. It should not be the freight inward. Now just letting you know that shipping cost over here is it can be a little bit of a debatable topic. So just keep that in your mind. You know, shipping cost means it should be the outward freight. So जितना भी outward फ्रेट है, so जितना भी आउटवर्ड फ्रेट है उसको हम शिपिंग कॉस्ट एक सेलिंग कॉस्ट के हिसाब से लेंगे. इनवर्ड यानी कि जो आपके जो रॉ मटेरियल्स जब आते हैं, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड ऑल दीस थिंग्स अगेन शुड बी एक्सपेंस either as incur or when advertising first occurs, right? So sellers may agree to reimburse customers for customers advertising costs. The revenues related to transactions that created such application generally recognized before reimbursement. Okay, so it's a simple thing over here. Now a few more steps just to keep that in your mind. General administrative expenses, general salaries or stationery, office expenses, this and that, this that. ठीक है, so क्या क्या है? Accounting, legal, professional fees, office salaries, insurance, wages, business supplies, office occupancy costs, and so on and so forth. Okay. You can give it a reading. I mean, of course, no one is going to ask you to. Now we are just building the foundation. We're just building up the foundation, right? So interest expense over here is recognized based on the passage of time. Always remember that interest expense is going to be a non-operational cost because it's not exactly a part of your business operations के. ऐसा नहीं है कि आप interest expenses के बिना आप business operations नहीं कर सकते. आप अगर खुद भी पैसे लगाए हो तो भी आप ऑपरेशन कर सकते हो. अगर आपने पैसे नहीं भी लगाया तो भी कोई बात नहीं, आप वैसे भी business कर सकते हो. So interest expense is always going to be a non-operation cost, or there are a few other things which is not a part of your business operations. Now, we are not going to talk much about interest expense because later we will be learning what? We will be learning the effective interest method, and then how effective interest method is used. Now, something which is going to be covered when we are learning something which is known as amortization of expenses. Amortization of your fixed income securities, or you can say, yes, amortization of interest. So material items that are unusual in nature, infrequent in occurrence, or could be both, would be reported as a separate item. So this is again, there could be some earthquakes, which is happening, fire in your factory, warehouse, it could happen as well. So these are unusual in nature. It's not something which is happening on a frequent basis. So just keep that in your mind. So whenever you have such kind of items over here, just make sure that you always treat it as a separate item, or a separate item or separate component of income from your continuing operations. And now a few other things over here, just on a one-liner basis. Gains or losses of similar nature that are not individually material must be aggregated. And then again, the nature and the effect of each item disclosed in the notes or reported in the income statement. So you have to make sure that you mention the nature. जैसे मैंने आपको बताया था पहले, जो एक सबसे important चीज जो है, जो कि लोग कभी कभी अनदेखा कर लेते हैं और लोगों को लगता है, so it's not that important, it's not that necessary, but it is, right? You have to make sure that you have mentioned the nature and the financial effect of such items, right? If there are, that means, let's say there were a few unusual items. What is the nature? What was the kind of loss or gain which has happened because of an unusual item, and what was the financial effect? कि इसके होने के कारण हमारे तो overall profits में कितना गिरावट देखने को मिला, and so on and so forth, right?
Now comes your discontinued operations. So when it comes to discontinued operations, like I told you before, just we just try to understand in details at the moment. That is, discontinued operations kya hai? Discontinued operations refer to, sorry, discontinued operations refer to, there could be some business segments. जैसे कि हमारा जो बिजनेस जो काम कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में काम कर रहा है, जैसे कि आपके पास डिफरेंट लाइंस ऑफ ऑपरेशंस हैं। आप फूड इंडस्ट्री में भी हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में भी हो, आप रिटेलिंग में भी हो, आप फाइनेंस में भी हो, आप अलग अलग ऑपरेशंस आप कर रहे हो, साइमल्टेनियसली एक बिजनेस चला रहा है। उसमें से एक यूनिट या एक सेगमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर आप उस business operations, because of market factors, because of this and that, a lot of things might have happened before, which is the reason where you may find that yeah, you can say that it's not actually worth it to continue those business operations, and we just try to shut it down, or we just say that okay, we're going to stop working on that segment, we are going to discontinue that. So जिस साल आपने डिसकंटिन्यू किया हुआ है उस साल को लेके उस साल में अगेन द थिंग इज दैट उस साल कोई भी अगर जब आप वाइंडिंग अप करते हो तो शट डाउन करते हो तो कोई भी प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी है आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने साल के बीच में अपने शट डाउन कर दिया उसको भूल गए, आप वो भी आपको रिपोर्ट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आर रिपोर्टेड सेपरेटली। ऑफ कोर्स keep this thing in your mind that you can't mix it up together, because that's the rule of US GAAP, which says that you have to make sure that you are keeping it separate, net of tax in the income statement, and that section is presented after the results of continuing operations. Of course, shareholders जब भी कोई आपका income statement देखेगा, so just they will definitely be concerned about knowing things relating to how exactly your existing operational businesses are working, rather than they are least interested in knowing those operations which have already been shut down, जो already बंद हो चुका है, कोई फायदा नहीं है उसके बारे में, मगर उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। That's it. Now, if a component of an entity discontinued operation is disposed of during the year or year period, any gain or loss in disposal must be disclosed on the notes to the financial statements or on the face of the income statement, right? Now, again, if a component of an entity is classified as held for sale, yes, it can also happen. Now, this is a very common situation, right? So if a component of an entity is classified as held for sale, right? So again, you would be showing it at the lower figure as compared to the carrying value or the fair value minus cost of sale, which is what we call it as NRV. इसको हम क्या कहते हैं? Net realizable value, right? So fair value minus the cost to sell is NRV. So NRV, or the carrying value, which is basically known as the book value. So the carrying value or the net realizable value, whichever is lower, right, it should be measured accordingly. Okay, इसको जब मेजरमेंट होता है, क्योंकि इसको वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि आप इसको होल्ड फॉर सेल रखते हो या फिर यू आर होल्डिंग इट फॉर सेल। अगर आप होल्ड फॉर सेल रखते हो या होल्डिंग इट फॉर सेल, दैट मींस you're waiting for others to come up and take up that unit, right? That is, take up all the assets and liabilities relevant to that particular unit. All right, so operating results reported in discontinued operations include any income earned or loss incurred during the entire reporting period. Operating results also include any loss for a written down to a fair value minus the cost to sale recognized on the initial classification, right? So just again, just give it a reading over here. Operating results again reported in the discontinued should be including any incomes or losses whatsoever the losses may be for that entire reporting period. Now, there is another small area just to understand or give a kind mention, which is intra-period tax allocation is required. That means, everyone should get the benefit. Let's say अगर कोई loss भी हो रहा है, जैसे कि continuing operation में कोई अगर profits कर रहे हो तो उसमें आप जैसे tax देते हो, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स एक्सपेंसेस मिलना चाहिए। तो वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे कि सर अगर कोई इंट्रा पीरियड टैक्स कलेक्शन का मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस और बेनिफिट इज गोइंग टू बी एलोकेटेड टू योर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, OCI
or maybe any other items which are debited or credited directly to the components of equity. All right. So we just straight away have a look at the example over here. Income statement presentation. We just understand or focus a little bit on the presentation over here and how exactly they are trying to report from a given piece of information. On July 1st, year one, MK company approved a plan to dispose of a segment X on October 1st, right? So again, just have a look at the important points from this particular question, right? So October 1st, year one के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में ध्यान देना कि ये सारे डेट्स और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे. एंड दिस इज अगेन they have approved a plan. And when exactly have they approved? They approved on July 1st, year one over here. Okay, so July 1st, year one, they have approved. As a result, segment X, which is a component of the company or the entity, was properly classified as discontinued operation and it was sold. Once again, they have approved. And the next thing what they have done is that they have actually sold it. That means it was held for sale and they have sold it on October 1st. That was July 1st. Now, this is October 1st, year one, for $480,000. So the tax rate is 40%. That's absolutely okay. The following data pertain to segment X over here. So yes, sir, segment X related जो data दिया जा रहा है. Operating losses were $110,000 for the period January 1st to June 30, year one. ठीक है. और यहाँ पे operating losses were $100,000 from July 1st to October 1st. हो गया, क्योंकि ये हो गया कितना, पहले 6 months, ये हो गया first 6 months. ठीक है, ये हो गया first 6 months. ठीक है, और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, and this is again next 4 months. ठीक है, टोटल 10 months का डेटा आपके पास है. ठीक है, क्योंकि ये कितना हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट्स अगेन नेक्स्ट 3 months, नॉट 4 months, सॉरी. दिस इज अगेन नेक्स्ट 3 months. ठीक है, सो नेक्स्ट 3 months का डेटा, तो यानी कि सर 9 months का डेटा आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है. ठीक है, operating losses presented above do not include a loss on disposal or a written down to fair value minus the cost to sale. Carrying amount, which is again, they have given you the book value over here, which was highly needed, and then they have also provided you the net realizable value, which is $450,000. Fair value minus the cost to sale is cost to sell the division or the segment is around $450,000. Now, following in general, right? So excluding segment tax in general, यानी कि उनके अलग business operations जो थे वो है आपके revenue, cost of goods sold, general administrative expenses, and then again your interest expense, which is $50,000 over here. And year one operating results of segment X are reported in discontinued operations. Now we're not solving anything, we're just giving you a idea on how things are going to be presented in the income statement, right? So the losses for discontinued operations for the year December, for the end of December 31st, year one will include what? Operating losses include for the entire reporting period, right? So that's again $110,000 and $100,000, which is exactly the figure what we got over here. Segment X का जो operating losses जो था, ये था 110 and 100, which is $210,000. ये आपको ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में, जहां से हमने डेटा लिया हुआ है. ये था हमारे सेगमेंट X का. ठीक है, and then again we have loss on write down to the fair value minus the cost to sale. Okay, so why do we do this? Is because you can see over here we are going to take the lowest figure, right? So we have to impair this. Now, of course, I was not using the word impairment. The reason is very obvious, because we have not been there yet till now, so we are not talking about impairment. But here you can see that if you just look at this, then you will understand that your book value is kind of like more than your net realizable value. So what you need to do is that you need to go for an impairment. Now, impairment means that you are going to reduce your book value back to the operating value, or back to the net realizable value. ठीक है, so impairment मतलब क्या?
your book value minus your net realizable value, whatever the difference is going to be, that's going to be your impairment. So अगर हमारे पास $600,000 अगर हमारा book value है, net realizable value अगर हमारा $450,000 है, ठीक है, तो कितना होगा हमारा, ये है 450, ठीक है ना, सो ये 450 है, ये 600 है, so $150,000 is going to be what, is going to be our impairment loss. And this impairment loss is going to be a part of your business loss. I mean, it's going to be a part of your expenditure on your income statement. So it's going to be your impairment loss. So don't you ever forget that you should take the $150,000 as an impairment loss over here as well. And again, but you are selling it for, let's say, did I mention? Yes, you are selling it for $480,000. So अगर 450 हमने उसके 600 से लेके 450 तक हमने रिड्यूस किया है, 450 को हम 480 पे बेचेंगे तो हमारा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये गेन ऑन डिस्पोजल को भी आपको लेना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट में, विच इज अगेन $30,000, विच इज कमिंग आफ्टर दिस कैलकुलेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। सो इसको समेशन करेंगे तो क्या होगा, सो $210,000 हमारा लॉस था, साथ ही साथ हमारा इम्पेयरमेंट लॉस 150 था, उसमें से गेन था 30 का, तो हमारा टोटल कितना बना, $330,000। $330,000 का आफ्टर टैक्स यानी कि नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट अगर हम निकालेंगे तो हमारा पोस्ट टैक्स लॉस क्या है, तो ये चीज क्या है हमारा 198, दिस इज नथिंग बट इट इज द पोस्ट टैक्स loss on discontinued. I'm just writing it as DISC, discontinued operation, right? So I hope it's clear, it's easy. तो ये 198 मुद्दा ये है कि सर ये 198 हम शो कहाँ पे करेंगे, ये आप मिलाओगे नहीं, यानी कि एक साथ आप कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के साथ आप ऐड करके नहीं दिखाओगे, आप इसको क्या करोगे, एक सेपरेट सेक्शन पे आप दिखाओगे, उसको एक अलग लाइन आइटम, सेपरेट सेक्शन नहीं, एक अलग लाइन आइटम, जैसे कि आपके रेवेन्यूज बन गए 950। I don't know whether we have this figure. Oh, okay. We have $950,000 is your revenue. Cost of goods sold is 380, and then you have gross profit. Gross profit में से आपने general administrative expenses, interest expense आपने minus किया, and then you have your operating expenses. Now, of course, you over here we are just combining everything together. Then you have your income from continuing operations before taxes. After taxes, then again you reduce 40% over here. Then you're getting 258. ना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का भी आप डिटेल यहाँ पे दिखाओगे कि हमारा लॉस कितना हुआ, इम्पेयरमेंट कितना हुआ, गेन कितना हुआ, टैक्स बेनिफिट कितना हुआ, और हमारा फाइनल लॉस कितना हुआ। सो नेट इनकम क्या होगा, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा net income जो आ रहा है is going to be $60,000, right? If you have 20,000 number of shares outstanding, which is what we have been asked to assume, then you just divide 20,000. You just divide the income from continuing operations. अगर आप कितना होगा, हमारे मेरे पास कैलकुलेटर है, if you just take 258 divided by 20,000, then you are getting around 12.9. So if you just take this $258,000 divided by 20,000, you shall get 12.9. And at the other side, if you're taking $198,000 negative, don't forget the negative sign. And if you again divide it by 20,000 shares, then you're getting per share, which is 9.9. If you just add it up together, then running up, you're getting 60,000 divided by 20,000, which is basically 3. All right, I hope you're here with us. And with this said, we are closing down with subunit number 1.2, which is your income statement as well. Any questions from here? If you have any questions, please just go ahead and you can open up your mic and you can ask whatever questions you have. And
Then we are going to start with subunit number 3, which is your equity. छोटा सा रीडिंग है ये, सब यूनिट नंबर 3. It's not equity, it's basically OCI or comprehensive income. Then after this, then we would be getting into equity. That is subunit number 1.4. छोटा सा रीडिंग है 1.3, which is comprehensive income. Now, we understand that comprehensive income is something which is comprising of your income statement and your other component. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि सर it has two components. One is net income and other comprehensive income. But I always try to understand in this way that comprehensive income is what? Is nothing but it is comprising your income statement and your other comprehensive income, OCI. Income statement and your other comprehensive income, which is OCI. ठीक है ना? So income statement जो है वो अभी हमने किया हुआ है, सब यूनिट नंबर 1.2 में हमने जो किया वो था इनकम स्टेटमेंट. OCI जो है वो है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो हमने अभी तक नहीं किया हुआ है, वो जो कि हम 1.3 में करने वाले हैं, वो है OCI. All right. So comprehensive income includes all the changes in the equity of a business. So just again, just trying to highlight so you guys would be a little bit familiarized with the definition and the meaning of this. Right. So comprehensive income includes all the changes in equity of a business during a period, except those from the investments, buy and distribution to the owners. It includes all the components of what? The first component over here is known as income statement, which I've done already. And the second component, which we are going to do right now, is known as other comprehensive income, which is OCI. Right. So, of course, there is a mnemonic as well, and we're getting you with the mnemonics later. Maybe in the next session, I'll just arrange some mnemonics so I can give it to you guys and you guys can use it. But then before we get into that, but we just try to understand what are the components of OCI. So OCI includes all the items of comprehensive income, which is not included in the net income. The most important thing, the reason why do we have an OCI? Why do we really have an OCI always existing in around us? So it's why do we have it? Why do we have an OCI around us all the time? Because there are few items which are, we can say that those are special transaction items. We can say that those are special items, which is, just give me a moment. Those are special items which is again not considered as a part of your, which is never going to be considered as a part of your income statement, but it's always there. Right. Take it. So what do we have over here? We have a few items. Just keep these items in your mind, so it's going to be easier for you to remember. Unrealized holding gains and losses on available for sale securities. हम बस key pointers को ऊपर ध्यान देंगे. Available for sale securities के कोई भी unrealized gains और losses को हम यहाँ OCI में लेते हैं. Gains and losses on derivatives, especially the cash flow hedges. ये ध्यान रखना, cash flow hedges को लेके derivatives को हम कहते हैं effective gains or losses on hedging activities, cash flow hedging. Hedging दो किस्म के होते हैं, एक होता है cash flow और एक होता है fair value hedging. So ये भी मैं आपको मेंशन करके बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है. So hedges जो होता है, अब जहाँ पे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में पढ़ोगे, hedges दो किस्म के होते हैं. एक होता है fair value hedge और एक होता है हमारा कैश फ्लो हेज. तो जो फेयर वैल्यू हेज है उसमें जो भी गेन्स लॉसेस होता है उसको हम यहाँ पे नहीं लेते, मगर हाँ, अगर जो कैश फ्लो हेजेस होता है तो वो सर हम यहाँ पे लेते हैं. So this is exactly what we do, right? So just keep this inside this box, so it's going to be easier for you to understand that yes, cash flow hedges के बारे में ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. फेयर वैल्यू hedges के कोई भी गेन्स और लॉसेस को हम यहाँ पे नहीं लेंगे. और क्या, सर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, कोई भी गेन्स और लॉसेस जो कि फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट में आता है वो भी हम यहाँ पे लेंगे, इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेंगे. और क्या,
Let's say in the changes in the fair value attributable to instrument specific credit risk for the financial liabilities. Okay, instrument specific credit risk, financial liabilities for the form. Now, always remember, one of the common thing over here is that whatsoever items you report in an OCI, we would be always showing it as a net of tax. So each component of OCI must be presented net of tax, or one component or one amount must be presented for aggregate tax effect on the total of OCI. या तो आप summation कर लो, उसका tax निकाल दो, या फिर individual item का post tax treatment निकाल के आप यहाँ पे दिखाओ. ठीक है, simple है. An entity that presents a full set of financial statements but has no items of OCI need not report OCI or the comprehensive income. Otherwise, an entity must present all the items of comprehensive income recognized for the period, either in one continuous financial statement or in two separate but consecutive statements, right? So again, वन कंटिन्यूअस स्टेटमेंट में क्या होता है कि सर एक स्टेटमेंट है, उसमें दो सेक्शंस है, ठीक है ना, एक सिंपल सा चीज है यहाँ पे. ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है वहां पे दो सेक्शंस होते हैं. या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर आप दो सेपरेट स्टेटमेंट्स इशू कर सकते हो, जहां पे एक स्टेटमेंट में होगा कंपोनेंट्स ऑफ नेट इनकम एंड टोटल नेट इनकम, एंड सेकंड स्टेटमेंट वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ योर ओसीआई. ओके, इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग. Okay, so if you just want to understand, see how exactly a single statement presentation looks like. So in one statement, you can see there are two sections, right? The first section over here is talking about the net income. The second section over here is talking about the OCI. Then you add it up together, and then you're finding the total comprehensive income over here. Right. So when it comes to net income, then you have your net revenues, your gain on sale of available for sale securities, AOCI, expenses. You have all the incomes and expenses and income. That's in general, right? So जैसे कि आपके income statement में होता है statement of income, or you can say this is something which is reminiscent or it's similar to what you have seen before, so far as income statements are concerned. And this is something which is only specific to OCI, other comprehensive income. Other comprehensive income में as you guys have seen already, that foreign currency translation and few of the items, जो भी हमने item यहाँ पे ऊपर हमने देखा था, उसी का एक छोटा सा presentation यहाँ पे है. ठीक है, a two statement presentation is easily derived from the example above. So you just split this one into two different statements. So the first statement would be having this much of data. The second statement would be having this much of data. That's all, right? So the final component of the statement of income is net income. Final component of statement of OCI is net income, and the final component is comprehensive. The first component is OCI. Final component is comprehensive income. All right. So this is all about reading number subunit number 1.3. We'll stop over here. If you have any questions, so just give 5 minutes for any clarifications if you have. In the next session, which will happen next Saturday, we are going to finish off study unit number 1, जहाँ पे हम 1.4 यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से हम शुरू करेंगे. स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक पेज सिंगल पेजर, एक दो डेढ़ पेज का टॉपिक है. ये हम कंप्लीट करके वी वुड बी पुशिंग ऑफ ऑल द वे टू स्टडी यूनिट नंबर 2, एंड जस्ट टू गिव you a bit of an understanding on what's exactly there in study unit number 2. Just give me a moment. Let's go back to study unit number 2, and then I will help you out in giving you a bit of a course details on what we should be doing in the next Saturday. Or we should be in the next class. We'll just let you know, and then we'll be giving you a brief idea on what should be the agenda for the next class. So in the next class, we will be actually getting in detailed understanding. We're getting into the detailed understanding of income statement items. जैसे कि income statement items में हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आएगा, अगेन इट्स गोइंग टू बी ए मच मोर स्ट्रेच्ड एंड एलैबोरेटिव डिस्कशन ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे. फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन के ट्रांजैक्शन के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. अर्निंग्स पर शेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क यू क्वेश्चंस, स्पेशली सिमुलेशन से आता है. रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. This is exactly what you would be learning in the next session after we finish off the remaining stuff from study unit number 1.
All right. So, any questions, guys? If you have any questions, please go ahead. If not, then I'll pass the dice to Prakash, sir. Yes, anybody has anything to ask? JJ? Anything to ask? Any query from both of us, Kausal and Prakash? Hello, JJ, are you there? Hello. Hello, JJ, are you there? I think he's not in front of the screen, huh? Okay. Then let's move on. No problem. Meeting next week. Huh? ठीक है. All right. Bye bye, Kausal. Yeah. Okay. Thank you. Yes, sir. Thank you Yeah. so Thank you much. for the session. Thank you for the Thank session. you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.